Okay, ठीक है, thank you. So I'm making you co-host, and then we request Deepak ji uh, to start reading further. ओके, हम आगे की रीडिंग स्टार्ट करते हैं. विल स्टार्ट विद टेक्स्ट 10.4.2 introduction. In text 10.4.2, Buddha proposes several criteria by which a trainee and an arahant can determine their respective standings. One of the particular interest concerns the relationship with five faculties: faith, energy, mindfulness, concentration, and wisdom. The trainee sees with wisdom the goal in which these faculties culminate, namely Nibbana, but cannot dwell in it. The Arhant sees with wisdom the supreme goal and can also dwell in that goal. तो यहाँ पे भिक्खु बोधि बता रहे हैं कि भगवान ने एक क्राइटेरिया दिया है जिससे कि जो मार्ग पे चल रहा है और जो अरहंत है वो दोनों अपनी रिस्पेक्टिव स्टैंडिंग के वो अ, इस लेवल पे हैं वो जान सकते हैं, जिसमें जो कंपैरिजन है वो इन फाइव स्पिरिचुअल फैकल्टीज को लेके है: फेथ, एनर्जी, माइंडफुलनेस, कंसंट्रेशन और विजडम. जो ट्रेनी है वो विजडम से गोल की तरफ तो देख सकता है, बट अभी जो है उसकी पूरी जो पांच फैकल्टीज हैं वो अभी तक पूर्ण नहीं हुई हैं. मतलब कि उसको अभी तक निब्बान नहीं मिला है. जो अरहंत है वो विजडम से उस सुप्रीम गोल को देख भी सकता है और उसमें ड्वेल भी कर सकता है कि आई थिंक ये सारी फाइव फैकल्टीज जो है वो पूर्ण हो चुकी है. At Koshambi in Goshita's park, the Blessed One addressed the monks thus: There is a method, monks, by means of which a monk who is a trainee standing on a plane of training might understand, I am a training, while a monk beyond training, standing on the plane of beyond training, might understand, I am beyond training. And what monks is the method by means of which a monk who is trainee, standing on the plane of a trainee, understands, I am a trainee. Here, monks, a monk who is trainee understands that really is, this is suffering, this is origin of suffering, this is cessation of suffering. This is the way leading to the cessation of suffering. This is a method by means of which a monk who is a trainee standing on a plane of training understands I am training. Again, a monk who is a trainee considers thus: is there outside here another ascetic or Brahmin who teaches Dhamma so real, true, and actual as the Blessed One does? He understands thus there is no other ascetic or Brahmin outside here who teaches a Dhamma so real, true, actual as the Blessed One does. This too is a method by means of which a monk who is trainee, standing on the plane of trainee, understands I am trainee. Again, monks, a monk who is a trainee understands the five spiritual faculties, the faculties of faith, energy, mindfulness, concentration, and wisdom. He does not yet dwell, having contacted with the body, that which is their destination, their culmination, their fruit, their final goal. But having pierced it through with wisdom, he sees. This too is a method by means of which a monk who is a trainee standing on the plane of trainee understands I am trainee. And what monks
is the method by means of which a monk beyond training, standing on the plane of beyond training, understands I am one beyond training. Here, a monk beyond training understands the five spiritual faculties, the faculties of faith till wisdom. He dwells, having contacted with the body that which is their destination, their culmination, their fruit, their goal, and having pierced it through with wisdom, he sees. This is a method by means of which a monk beyond training, standing on the plane of one beyond training, understands I am one beyond training. Again, a monk beyond training understands the six faculties, the eye faculty, the ear faculty, the nose faculty, the tongue faculty, the body faculty, the mind faculty. He understands these six faculties which sees completely and totally without remainder, and no other six faculties will arise anywhere in anywhere. This too is a method by means of which a monk beyond training, standing on the plane of beyond training, understands I am beyond training. Sir, can we request you then? कौशाम्बी में घोषित पार्क जो घोषित का जो मोनेस्ट्री थी, वहां पे भगवान ने भिक्षुओं से कहा, भिक्षु एक तरीका है जिससे कि कोई भिक्षु ये जान सकता है कि वो एक सिख है, और दूसरा भिक्षु जो कि असिख है, मतलब जो अरहंत है, वो भी जान सकता है इस तरीके से कि मैं असिख हूँ, तो मैं अरहंत बन गया हूँ। क्या है वो तरीका जिससे कि से जो अभी अरहंत नहीं है वो भी जान सके कि मैं अभी अरहंत नहीं हूँ, और जो अरहंत है वो जान सके कि मैं अरहंत हूँ। तो जो सिख है, मतलब आर्य तो है लेकिन अभी सीख रहा है, मतलब शुद्धापन सर्वगामी अनागामी है, तो वो ये बात ठीक से समझता है, चार आर्य सत्यों को ठीक से समझता है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और दुख के निवारण का मार्ग है। तो इस तरह से वो एक जो सिख है वो जान सकता है कि मैं सिख हूँ, मैं मुक्ति के द्वार पे, मुक्ति के रास्ते पे पड़ा चल रहा हूँ। और जो सिख है वो इस तरह से विचार करता है कि क्या कोई और ब्राह्मण या श्रमण है जो कि धम्म सिखाता है, जो सचमुच में सत्य है, और बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि भगवान बुद्ध हैं। तो समझता है कि ऐसा कोई और ब्राह्मण या श्रमण नहीं है इस भगवान बुद्ध की परंपरा के बाहर, जो कि धम्म सिखाए, जो कि इतना बिल्कुल स्पष्ट है और सत्य है जैसा कि भगवान सिखाते हैं। ये भी एक तरीका है जिससे कि एक सिख जान सकता है कि मैं सिख हूँ, मैं मुक्ति के मार्ग पे चल रहा हूँ। और एक और तरीका बताते हैं कि जो भिक्षु जो सिख है वो जानता है पांच इंद्रियों को, जो आध्यात्मिक इंद्रियां हैं, श्रद्धा, वीर्य, सती, समाधि, प्रज्ञा, उनको ठीक से समझता है। लेकिन अभी वो उनका जो ध्येय है, उनका जो डेस्टिनेशन है, उसको जानता तो है, लेकिन वो उसको स्पर्श नहीं कर सकता, तो उसका डायरेक्ट अनुभव नहीं कर पाता, जो परम निर्वाण है उसका अनुभव नहीं कर पाता। लेकिन उसने प्रज्ञा के हिसाब से देख लिया है कि ऐसा होगा, ऐसे ख्याल से। इस प्रकार भी एक भिक्षु जो सिख है वो समझ सकता है कि मैं सिख हूँ। और फिर भिक्षु क्या तरीका है जिससे कि कोई अरहंत जो है ये समझ सके कि मेरे को अब और कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है, मैं
मैं अब कुछ और सीखना की आवश्यकता, मैं सीखने से बाहर हो चुका हूँ। तो वही समझता है कि जो पांच इंद्रियां हैं, आध्यात्मिक इंद्रियां, श्रद्धा वीर्य सती समाधि प्रज्ञा, ये समझता है। और सिर्फ समझता ही नहीं है, वो उनका अनुभव भी कर सकता है कि उनका जो गोल है, उनका जो ध्येय है, उनका जो एम है, वो उसको भी वो अपने सचमुच में डायरेक्टली अनुभव कर सकता है। उसने प्रज्ञा से तो देख ही लिया है, लेकिन वो वास्तव में उसका अनुभव भी कर सकता है। तो ये एक तरीका है जिससे कि अरहंत जो है वो जान सकता है कि मैं अब, मुझे और कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। फिर एक और तरीका बताते हैं कि वो भिक्षु वो कैसे समझे कि जो छह सामान्य इंद्रियां हैं, आँख नाक कान जिह्वा शरीर और मन, वो समझता है कि ये छह इंद्रियां समाप्त हो जाएंगी और उसके बाद कोई और नई इंद्रियां जागेंगी नहीं। उसको मतलब ये क्लियर है कि उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। ये भी एक तरीका है जिससे कि एक अरहंत कुछ समझ सकता है कि मुझे अब और कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। That's it. सर ये जो लास्ट इसमें दिखाया था, ड्वेल इन द गोल, जो पहले फर्स्ट इसमें आया था, तो इसमें से कौन सी चीज हम बोलेंगे ड्वेल इन द गोल? मतलब वो सचमुच में निर्वाण का अनुभव जब चाहे कर सकता है। सारी शिक्षा का उद्देश्य है निर्माण, जिसका मतलब उसको ये बिल्कुल क्लियर है कि अब अनुभव से जानता है कि अब मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा। तो वो बात है, दैट इज द फाइनल गोल ना। दीपक जी एक मिनट जरा, जहाँ पर ब्रीफ था ना, कंसाइज वर्जन आता है जो भिक्खु बोधि का, अरहंत सीज विद विजडम सुप्रीम गोल एंड कैन। यहाँ पे जो Okay, so ट्रेनी you है, analyze your goal according to these 6 parameters. ऐसे ट्रेनी जो है, जो सीख रहा है, अभी सीख रहा है, वो जानता है कि ये श्रद्धा वीर्य सती समाधि प्रज्ञा मुझे निर्वाण तक ले जाएंगे। उसने उसको समझ लिया है, ठीक से समझ लिया है, लेकिन वो उस निर्वाण को अनुभव नहीं कर सकते। कैन नॉट ड्वेल इन इट। ड्वेल इन इट मतलब उसमें रह नहीं सकता, उस परिस्थिति, उस आया नहीं। निर्वाण की स्थिति में टिक रह नहीं सकता, क्योंकि वो उसका जैसे टचेज देम विद द बॉडी ना, काया से स्पर्श नहीं करने का मतलब बेसिकली मेटाफर है कि वो उसको अनुभव नहीं कर सकता। सर इसमें एक ये जो बात बोली कि ही कंसिडर्स द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा सुप्रीम और दैट विल टेक टू द गोल, हाउ डज दैट फॉर्म अ क्राइटेरिया? ये व्यू से रिलेटेड है क्या? इट इज रिलेटेड टू लैक ऑफ फेथ डाउट ना, फेथ डाउट फेथ नहीं। फेथ वाली बात होगी ना सर ये। या जो हमारी तीन संयोजन है, सक्काय दिट्ठी, सीलबद्ध परामर्श और विचिकित्सा, विचिकित्सा कंप्लीटली समाप्त हो गई है। अभी भी वो इधर उधर देख नहीं रहा है कि मुझे ये भी ये तरीका अडॉप्ट कर लूँ, ये तरीका अडॉप्ट कर लूँ। उस सेंस कोई और भी तरीका है जो भगवान से शायद इससे काम नहीं चल रहा, कुछ और कर लूँ। आज तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारे को these 6 parameters will tell us where we stand, isn't it? फाइव फैकल्टीज, फाइव स्पिरिचुअल फैकल्टीज की डेवलपमेंट और क्लैरिटी होना कि ये निर्वाण तक ले जाएंगी, और कोई डाउट ना रहना उसके बारे में। नहीं, वो जो उधर सिख अभी जो आपने पढ़ा ना कि वो जो अभी सुत्त था उसमें बोल रहा है ना शायद ये। उसमें तो था कि जो दूसरी सामान्य इंद्रियां हमारे आँख नाक कान, हाँ, वो अब हम उसको क्लियर है कि अब मेरा दोबारा जन्म नहीं। बेसिकली इट इज अ वे ऑफ सेइंग कि आई विल नॉट गेट इट अगेन। मैं अच्छा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बोल रहा है कि
आप देख सकते हो कि आप कहाँ खड़े हो, और वहां से यू कैन एनालाइज कि भाई आपका कितना दूर है गोल। ऐसे भी हाँ, समझते हैं क्या? ऐसे दूर दूर है नहीं मालूम पड़ेगा। ऐसा मतलब ऐसा नहीं है। where do you stand actually? एक्चुअली स्टैंड तो क्लियर किस ही है, राइट, कि हम किस अरंत। लाइन से कह रही हो कि दूर पता चल रहा? कौन सी लाइन है वो दीपक को बताओ, उसको हाईलाइट कर दूर देगा। से नहीं, दूर तो नहीं बोला, दूर तो मैंने अपना डाल दिया, लेकिन इससे पता चल रहा है कि हम कहाँ खड़े हैं। बस सीधी सी बात की भाई, हाँ, हमारे को कोई डिल्यूजन नहीं होना चाहिए कि अरहंत हो गए या नहीं हुए, या इस तरह से जो ना कम ना ज्यादा, जहां हम खड़े हैं वो पता चलना चाहिए, ये वाली बात। ऐसा तुम्हें लगने लगा है क्या? नहीं, ये नहीं लग रहा। मैं ये आई मीन दैट्स हाउ, जब भी अगर डिल्यूजन में आए कोई, ऐसा या तो होता ही है ना कि डिल्यूजन तो हाँ, होता ही है ना वो तो कि। बहुत बहुत जल्दी बहुत हो जाता है, हाँ, दैट तो इज ट्रू। जहाँ सजग रहने के लिए, जस्ट टू बी अलर्ट, कि हम अपने आप को एनालाइज करने के लिए भी भगवान ने ऐसी शिक्षा दी हुई है कि आप देख सकते हो कि कहाँ पर आप हो, और अरहन मतलब जो अल्टीमेट गोल। एक्चुअली जो डिल्यूजन कई बार ये हो जाता है कि मेरी या तो प्रोग्रेस अच्छी हो रही है, साधना अच्छी हो रही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ। बट आई थिंक ये डिल्यूजन होना कि अब मैं को निर्माण मिल गया है, दैट एक्चुअली विल बी ए वेरी बिग डिल्यूजन। बट यहाँ पे वो वाली बात आ नहीं रही, खाली यहाँ पे अ, बस डिफरेंस बता रहे हैं बिटवीन ट्रेनिंग एंड आनंद। ओके, हम आगे अगर बढ़ते कभी हैं। डाउट हो तो ये चेक कर लेना चाहिए कि सक्काय दृष्टि है कि नहीं है। दैट इज द श्योर शॉर्ट टेस्ट। पांच खंडों के प्रति मैं मेरे का भाव है कि नहीं है, तो क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल सर। So that will be, sir, I think a good way to see कि whether you are making progress or not. बिल्कुल। अब लेकिन सर वो दिट्ठी है ना, दिट्ठी है एक्चुअली वो, इट्स डिल्यूजनल। बिल्कुल सक्का है दिट्ठी, पता नहीं ठीक चलता, बात है। देर से पता चलता वो है। उसको कुछ भी कहते हो, डिल्यूजन के डिल्यूजन शब्द थोड़ा भारी पड़ता है ना, तो ऐसा लगता है कि वी नीड टू गो टू ए हॉस्पिटल। ऐसा नहीं है डिल्यूजन का मतलब। तो इसलिए वो अंग्रेजी में बड़ी दिक्कत हो जाती है ना। अविद्या कहोगे तो बड़ा लगता है, हाँ अविद्या है, ठीक है। प्यार से मारते हैं ना सर। या अब हम कहें कि हम डिलूडेड हैं तो लोग कहें चलो तुम्हें ले चलते हैं साइकेट्री डिपार्टमेंट। Okay, आगे पढ़ते हैं। The text that follows offer different perspective of an arhant. Text 10.4.3 characterize the arhant with series of metaphors elucidated in the same passage. I think main passage को ही पढ़ लेते हैं। A monk whose crossbar has been lifted. Monk, monks, and arhant is called one whose crossbar has been lifted, whose trench has been filled, whose pillar has been uprooted, one who has no bolt, a noble one whose banner is lowered, whose burden is lowered, who is unfiltered. And how is the Arhant one whose crossbar has been lifted? Here the Arhant has abandoned ignorance, has cut it off at the root, made it like a palm stump, done away with it, so that it is no longer subject to future arising. This is how he is one whose crossbar has been lifted. So crossbar का मतलब क्या होता है? जो यहाँ पे बांधते हैं ना, जो पशुओं को बांधने का तरीका होता है ना, दो बैल जैसे ऊपर जो डंडा लगाते हैं, तो Okay. दो बांधने से योक होता है, Okay. जैसे Yoke. बंध जाता है आदमी।
वैसे जिस तरह से जिस डंडे से हम बंधे हुए हैं संसार से, Okay. और ये ट्रेंच का क्या मतलब होगा यहाँ पे? वो तो मतलब ये कोई सिमिली होगी ना, जिन्होंने इस सूत्र में, वो सूत्र पढ़ेंगे तो शायद क्लियर हो जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ। मतलब ये पूरे का पूरा जो सेंटेंस है ना, इसको थोड़ा ये सा एक समझाइएगा। हाँ, ये एक सूत्र का पार्ट है। तो इससे पहले जो बात आई थी वो हम इसमें आ नहीं रही ना, तो सूत्र देखेंगे। हालांकि उत्तम सूत्र वो तो बड़ा भाई, बहुत ही ग्रेट सूत्र माना जाता है। खोल दो उसको दीपक, वही देख लेते हैं। मध्यम निकाय 22। उसमें से सिमिलीज ही सिमिलीज है। Simile of cobra ऐसे। बिल्कुल भी। वो दीपक जी गूगल ही कर लीजिए तो पूरा डायरेक्टली आ जाएगा। कलेक्शन। MN22, right? MN 22 ही है ना इसका रेफरेंस? हाँ जी सर। ठीक, मैं भी चेक कर लेता हूँ। वेरी प्रोफाउंड सत्तावीस, उनको उसको पूरा पढ़ना चाहिए। इसको इंग्लिश में पढ़ दूं सर? हाँ हाँ। सूत्र का नाम है द सिमली ऑफ द कोबरा। So I have heard. At one time, Buddha was staying near Savatthi in Jeta's Grove, Nath Pindika's monastery. Now, at that time, a mendicant called Aritha, who had previously been a vulture trapper, had the following harmful misconception. As I understand the Buddha's teaching, the acts that he says are obstructions are not really obstructions for the one who performs them. Several mendicants heard this rumor. They went up to Aritha and said to him, "Is it really true, Reverend Aritha, that you have such a harmful misconception? As I understand the Buddha's teaching, the acts that he says are obstructions are not really obstructions for the one who performs them." Absolutely, Reverends. As I understand the Buddha's teaching, the acts that he says are obstructions are really not obstructions for the one who performs them. Then, wishing to dissuade Aritha from his view, the mendicants pressed, and grilled him. Don't say that, Aritha. Don't misrepresent the Buddha, for misrepresenting of the Buddha is not good, and the Buddha would not say that. In many ways, the Buddha had said that obstructions are obstructive and that they really do obstruct the one who performs them. The Buddha says that sensual pleasures give little gratification and much suffering and distress. They are all the more full of drawbacks. With the simile of skeleton, a scrap of meat, a grass touch, a pit of glowing coals, a dream, a borrowed goods, fruit on a tree, a butcher's knife, and
chopping board, swords and spears. A snake said, the Buddha says that these sensual pleasures give little gratification and much suffering and distress. They're all more full of drawbacks. But even though the mendicants pressed and grilled him in this way, Arita obstinately stuck to his misconception and insisted on it. When they weren't able to dissuade Arita from his view, the mendicants went to Buddha, bowed, sat down to one side, and told him what had happened. So the Buddha addressed one of the monks. Please, monk, in my name, tell the mendicant Arita, formerly a vulture trapper, that the teacher summons him. Yes, sir, the monk replied. He went to Arita and said to him, Reverend Arita, the teacher summons you. Yes, Reverend, Arita replied. He went to Buddha, bowed and sat down to one side. The Buddha said to him, Is it really true, Arita, that you have such a harmful misconception? As I understand the Buddha's teaching, the acts that he says are obstructions are not really obstructions for the one who performs them. Absolutely, sir. As I understand the Buddha's teaching, the act that he says are obstructions are really not obstructions for the one who performs them. Futile man, who on earth have you ever known me to teach in this way? Haven't I said in many ways that obstructive acts are obstructive and that they really do not obstruct the one who performs them? And they really do obstruct the one who performs them. I haven't said the sensual pleasures. I have said that sensual pleasures give little gratification and much suffering and distress, and they're all the more full of drawbacks. With the simile of the skeleton, a scrap of meat, a grass torch, a pit of glowing coals, a dream, a borrowed goods, fruit on a tree, a butcher's knife and chopping board, swords and spears, a snake's head. I've said that sensual pleasures give little gratification and much suffering and distress, and they're all the more full of drawbacks. But still, you misrepresent me by your wrong grasp, harm yourself, and brim with much wickedness. This will be for your lasting harm and suffering. Then the Buddha said to the mendicants, What do you think, mendicants? Has this mendicant Arita kindled even a spark of ardor in his teachings and training? How could that be, sir? No, sir. When this was said, Arita sat silent, dismayed, shoulders drooping, downcast, depressed, with nothing to say. Knowing this, Buddha said, Futile man, you will be known by your own harmful misconception. I'll question the mendicants about this. Then Buddha said to the mendicants, Mendicants, do you understand my teachings as Arita does when he misrepresents me by his wrong grasp, harms himself and brims with much wickedness? No, sir. For in many ways the Buddha has told us that obstructive acts are obstructive and they really do not obstruct the one who performs them. They really do obstruct the one who performs them. The Buddha had said that sensual pleasures give little gratification and much suffering and distress, and they are all the more full of drawbacks. With the simile of a skeleton, a snake said, the Buddha had said that sensual pleasures give little gratification and much suffering and distress, and they're all the more full of drawbacks. Good mendicants, it is good that you understand my teachings like this, for in many ways I have said that obstructive acts are obstructive. I've said that sensual pleasures give little gratification and much suffering and distress, and they're all the more full of drawbacks.
But still, this Arita misrepresents me by his wrong grasp, harms himself, and brims with much wickedness. This will be for his lasting harm and suffering. Truly, mendicants, it is quite impossible to perform sensual acts without sensual desire, sensual perceptions, and sensual thoughts. Take a futile person who memorizes the teaching, statements, and mixed prose and verse discussions, verses, inspired explanation, legends, stories of past lives, amazing stories, and elaborations, but they don't examine the meaning of those teachings with wisdom. So they do not come to an acceptance of them after deliberation. They memorize the teaching for the sake of finding fault and winning debates. They don't realize the goal for which they memorize them because they wrongly grasp, and those teachings lead to their lasting harm and suffering. Why is that? Because of their wrong grasp of teachings. Suppose there was a person in need of a cobra, and while wandering in search of a cobra, they see a big cobra and they grasp it by the coil or the tail, but the cobra would twist back and bite them on their head, on their arm, or other major or minor limb, resulting in death or deadly pain. Why is that? Because of the wrong grasp of the cobra. In the same way, a fertile person memorizes the teaching, and those teachings lead to their lasting harm and suffering. Why is that? Because of the wrong grasp of the teaching. Now take a gentleman who memorizes the teaching statements, mixed prose and verse discussions, verses, inspired exclamations, legends, stories of past lives, amazing stories, and elaborations. And once he memorizes them, examines them, their meaning with wisdom, and comes to an acceptance of them after deliberation. He doesn't memorize a teaching for the sake of finding fault and winning debates. He realizes the goal for which he memorized them because they are correctly grasped. Those teachings lead to his lasting welfare and happiness. Why is that? Because of his correct grasp of the teachings. Suppose there was a person in need of a cobra while wandering in search of a cobra. They'd see a big cobra and hold it down carefully with the cleft stick. Only then they would only then they would only then would they correctly grasp it by the neck. And even though the cobra might wrap its coils around the person's hand or arm or sometimes other major or minor limbs, that wouldn't result in death or deadly pain. Why is that? Because of the correct grasp of the cobra. In the same way, a gentleman memorizes the teachings, and those teachings lead to lasting welfare and happiness. Why is that? Because of his correct grasp of teachings. So, mendicants, when you understand what I have said, you should remember it accordingly. But if I have said anything that you don't understand, you should ask me about it or some competent mendicants. Mendicants, I will teach you a simile or the teaching of a raft for crossing over, not for holding on to it. Listen and apply your mind. I will speak. Yes, sir, the Buddha said. Suppose there was a person traveling along the road. They'll see a large delge whose near shores were dubious and perilous, while the far shores were a sanctuary free of peril. But there was no ferry or a bridge for crossing over. They'd think, why don't I gather grass, sticks, branches, leaves, and make a raft? Riding on the raft and paddling with my hands and feet, I can safely reach the far shore. And so they'll do that exactly. And when they've crossed over the far shore, they think the raft has been very helpful to me. Riding on the raft and paddling with my hands and feet, I've safely crossed over the far shore. Why don't I hoist it on my head and pick it on my shoulder and go where I
want. What do you think, mendicants? Would that person be doing what should be done with that raft? No, sir. And what mendicant should that person do with that raft? When they had crossed over, they should think the raft had been very helpful to me. Why don't I beach it on dry land or set it adrift in the water and go wherever I want? That's what the person should do with the raft. In the same way, I have taught the assembly of teachings as a raft for crossing over, not for holding on. By understanding the assembly of the raft, you will even give up the teachings, let alone what is not the teachings. Mendicants, there are these 6 grounds of views. What 6? Take an unlearned, ordinary person who has not seen the noble ones and is not skilled, not trained in the teaching of the noble one. Try. They have not seen the true person and neither skilled nor trained in the teaching of the true persons. They regard form as this is mine, I am this, this is myself. They also regard feelings, perceptions, choices, whatever is seen, heard, thought, known, attained, sought, and explored by the mind. This is mine, I am this is myself. As for this ground for the 4 views, the cosmos and the self are the one and the same. After death, I will be there, permanent, everlasting, eternal, imperishable, and will last forever and ever. They regard this also as this is mine, I am this is myself. But a learned noble disciple has seen the noble ones, is skilled and trained in the teaching of the noble one. They have seen true persons and are skilled and trained in teaching of true persons. They regard form like this is not mine, I am not this is not myself. This is they also regard feelings, perceptions, choices, whatever is seen, heard, thought, known, attained, sought, and explored by their mind like this. This not mine, I am not this is not myself. And the same for this ground for views. The cosmos and the self are not the same. After that I will be that permanent, everlasting, eternal, imperishable, and will last forever. They also regard like this is not mine, I am not this is not myself. Seeing in this way, they're not anxious about what doesn't exist. When he said that, one of the mendicants asked Buddha, Sir, can there be anxiety about what doesn't exist eternally? There can, mendicant, said the Buddha. It's when someone thinks, oh, it once was mine, but is mine no more. Oh, it could be mine, but I do not get it. This sorrow and wail and lament beating their breast and falling into confusion. That's how there is anxiety about what doesn't exist externally. But can there be no anxiety about what doesn't exist externally? There can be, mendicant, said Buddha. It is when someone doesn't think oh, it, it, it once was mine, but it is mine no more. Oh, it could be mine, but I do not get it. That's they don't sorrow and wail and lament, beating their breast and falling into confusion. That's how there is no anxiety about what doesn't exist externally. But can there be anxiety about what doesn't exist internally? There can, mendicant, said the Buddha. It is when someone has such views, the cosmos and the self are one and the same. After that, I will be that permanent, everlasting, eternal, imperishable, and will last forever. They hear the realized one or their disciple
or their disciple teaching Dhamma for uprooting of all the grounds, fixations, obsessions, insistence, and underlying tendencies regarding the views for the stilling of all the activities, the letting go of all the attachments, and the ending of craving, fading away, cessation, and extinguishment. They think, whoa, I'm going to be annihilated and destroyed. I won't even exist anymore. This sorrow, wail, lament, beating breast, falling into confusion. That's how there is anxiety about what doesn't exist internally. But can there be no anxiety about what doesn't exist internally? There can, said the Buddha. It is when someone doesn't have such a view, the cosmos and the self are the one and same. After that, I will be there, the permanent, everlasting, eternal, imperishable, and will last forever and ever. They've heard the realized one or their disciples' teachings, Dhamma, for the uprooting of all the ground fixations, obsessions, insistence, and the underlying tendencies regarding views, for the stilling of all the activities, the letting go of all the attachment, the ending of cravings, fading away, cessation, and extinguishment. They don't think, whoa, I'm going to be annihilated and destroyed. I won't even exist anymore. They don't sorrow and wail and lament, beating their breast and falling into confusion. That's how there is no anxiety about what doesn't exist externally. Mendicants, it would make sense to be possessive about something that's permanent, everlasting, eternal, imperishable, and will last for forever and ever. But do you see any such possession? No, sir. Good mendicants. I also can't see such possession. I would make it would make sense to grasp at a theory of self that doesn't give rise to sorrow, lamentation, fear, sadness, distress. But do you see any such theory of self? No, sir. Good mendicants. I also can't see any such theory of self. It would make sense to rely on the views that didn't give rise to sorrow, lamentation, pain, sadness, distress. But do you see any such view that to rely on? No, sir. Good mendicants. I can't also see such view to rely on. Mendicants, where a self to mendicants were a self to exist, would there be the thought belonging to self? Yes, sir. Where would that belong to self to exist? Would the thought, would there be thought myself? Yes, sir. But since a self and what belongs to self are not found as genuine fact, is not the following a totally foolish teaching? The cosmos and self are one and same. After that, I will be that permanent, everlasting, eternal, imperishable, and will last forever and ever. How could it be, sir? It is it is totally foolish teaching. Foolish teaching. What do you think, mendicants? If form permanent or impermanent? Impermanent, sir. But if it's permanent, is it suffering or happiness? Suffering, sir. But if it is impermanent, suffering and perishable, is it fit to be regarded? Thus, this is mine, I am this is myself. No, sir. What do you think, mendicants? Is feeling, perception, choices, consciousness permanent or impermanent? Impermanent, sir. But if it is impermanent, is it suffering or happiness? Suffering, sir. But if it is impermanent, suffering, and perishable, is it fit to be regarded? Thus, this is mine, I am this is myself. No, sir. So, mendicant, you should truly see any kind of form at all, past, future, or present, internal or external, solid or subtle, or inferior or superior, far or near, all forms with right understanding. This is not mine. I am not this is not myself. You should truly see any kind of feeling, perception, choices, consciousness at all, past,
future, present, internal, external, solid or subtle, inferior or superior, far or near, all consciousness with the right understanding. This is not mine, I am not this is not myself. Seeing this, a learner, noble disciple grows disillusioned with form, feeling, perception, choices, consciousness. Being disillusioned, desires fades away. When desires fade away, they are freed. When they are freed, they know they are freed. They understand rebirth is ended. The spiritual journey has been complete. What has to be done has been done, and there's nothing further to be further for this place. Such a mendicant is one who is called one who has lifted the crossbar, one who has filled the moat, one who has pulled up the pillar, one who has unimpelled, and a noble one who, with banner lowered and burden dropped and detached. And how has a mendicant raised the crossbar? It is when the mendicant has given up ignorance, cut off at a root, made it like a palm stump, obliterated it, so it's unable to arise in the future. That's how mendicant has lifted the crossbar. And how the mendicant has filled the moat. It is when the mendicant has given up transmigrating thoughts through birds, future lives, cut it at the root, made it like a palm stump, obliterated it so it's unable to arise in future. That's how mendicant has filled in the moat. In the moat. And how has mendicant pulled up the pillars? It is when the mendicant has given up craving, cut off its at root, made it like a palm stump, obliterated it, so it's unable to arise in future. That's how mendicant has pulled up the pillar. And how is mendicant unimpeded? It is when the mendicant has given up five lower fetters, cut them off at the root, made them like a palm stump, obliterated them so they are unable to arise in the future. That's how mendicant is unimpeded. How is mendicant and noble one with a banner lowered and burden dropped, detached? It is when the mendicant has given up conceit, I am cut off at root, made it like a palm stump, obligated it so it's unable to arise in future. That's how a mendicant is a noble one with a banner lowered and burden dropped and detached. When mendicant's mind was freed like this, the gods, together with Indra, the divinity, and the progenitors, search as they may, will not discover. This is the basis of the realized one's consciousness. Why is that? Because even in this very life, the realized one is not found, I say. Though I state and assert a certain Brahmin misrepresent me with correct, hollow, false, untruthful claim, the ascetic Gautama is an exterminator. He advocates annihilation, eradication, non-existence of the existing beings. They misrepresent me as what I am not, saying what I do not say. In the past, as today, what I describe is suffering and cessation of suffering. This being is for this being, so if others abuse, attack, harass, trouble the realized one, he doesn't get resentful, bitter, emotionally exploited. Or if others honor, respect, revere, or venerate him, he doesn't get thrilled, elated, or emotionally excited. If they praise him, he just thinks. They don't do such things for me regarding what in the past was completely understood. So, mendicants, if others abuse, attack, harass, trouble you, don't make yourself resentful, bitter, emotionally exploited. Or if others honor, respect, revere, or venerate you, don't make yourself thrilled, elated, or emotionally excited. If they praise you, just think they do such thing for us regarding what in the past was completely understood. So mendicants, सर इसका मतलब क्या हुआ? They do such things for us regarding what in the past was completely understood. हमको क्रिटिसाइज करते हैं
या दूसरे जो हमको रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये सोचना चाहिए कि जो पुरानी चीज जिस कारण से वो कर रहे हैं वो वही है जो कि चीजें उनको समझ में पास्ट में समझ में आ गई थी। मतलब क्या हो सकता है कि मतलब हमको ब्रिंग इट डाउन टू द नॉर्मल लेवल, कि अगर कोई मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है तो कर रहा होगा क्योंकि मैंने पास्ट में कुछ ऐसा किया होगा जिससे मैंने क्रिटिसिज्म डिजर्व करता हूँ। और अगर मुझे कोई रेस्पेक्ट कर रहा है तो ये बात है कि भाई वो उसने सोचा होगा कि मैंने पुराना कोई अच्छी बात की है इसलिए मुझे प्रेज कर रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो कोई अब्यूज कर रहा है तब भी आप परेशान ना हो, और प्रेज कर रहा है तो भी आप एक्साइट ना हो। तो यही सोचो कि चीज़ें जो उनको समझ में आ गई हैं तो इसलिए वो हमको प्रेज कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हमने ऐसे की जो उनको नहीं समझ में आ रही तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। यू कैन अंडरस्टैंड इट इन वेरी सिंपल वे लाइक दैट। Yes, sir. So mendicants, give up what isn't yours. Give up what giving it up will bring you lasting welfare and happiness. And what isn't yours, form isn't yours. Give it up. Giving it up for lasting welfare and happiness. Feeling, perception, choices, consciousness isn't yours. Give it up. Giving it up will be for your lasting welfare and happiness. What do you think, mendicants? Suppose a person was to carry off a grass, take branches and leaves in this Jeta's grove and burn them, or do what they want to do with them. What do you think? The person is carrying us off, burning us, or doing what they want with us? No, sir. Why is that? Because to us, they are neither self or not belonging to self. In the same way, mendicants give up what isn't yours. Give it up will giving it up will be for your lasting welfare and happiness. And what isn't yours, form, feeling, perception, choices, consciousness, isn't yours. Give it up. Giving it up will be for your lasting welfare and happiness. The teaching well explained thus by me is clarified, revealed, and illuminated and stripped of patchwork. In this teaching that thus well explained for those mendicants who are perfect, who have ended the defilement, completed the special turning, done what has to be done, laid down the burden, achieved their heart's goal, utterly ended the fetter of continuous existence, and are rightly freed through enlightenment. There is no cycle of rebirth to be found. In this teaching, we will explain those mendicants who had given up the five lower fetters are all reborn spontaneously. They are extinguished there and are not liable to return from that world. In this teaching, thus well explained, those mendicants who have given up their three fetters and weakened greed, hate, and delusion are all once returners. They come back to this world only once then they make an end to the suffering. In this teaching, thus well explained, those mendicants who have ended three fetters and all stream enters not liable to be reborn in the underworld destined for awakening. In this teaching, thus well explained, those mendicants who are followers of teachings or followers of faith are all destined for awakening. The teaching well explained thus by me is clarified, revealed, illuminated, and stripped of patchwork. In this teaching, thus well explained, those who have a degree of faith and love for me are all bound for heaven. This is what the Buddha said. Satisfied, the mendicants approved what Buddha said. Thank you, Deepak. Reading the whole thing, so I think we understood much more than what was in that small extract. वो चॉइस जब थोड़ा इसमें पीछे जाएंगे, उसमें एक चॉइस आया था कहीं जहां पर जी। वो परसेप्शन फीलिंग की बात आई थी। हाँ, चॉइसेस का मतलब है संखार। चॉइसेस का क्या मतलब हुआ? संखार वो ट्रांसलेशन किया गया। अच्छा, संखार का ट्रांसलेशन चॉइसेस है।
चॉइसेस भी हो सकता है, वेरी इट्स अ मैटर ऑफ मेंटल पर्सनल चॉइस फॉर्मेशन ऑफ द बोलते हैं पर्सन। उसको। संखारा को वोलिशनल फॉर्मेशन जो मतलब है वो क्या है? वोलिशन नॉर्मली वोलिशनल फॉर्मेशन करते हैं ना, इसका मतलब हमारा वोलिशन है, मैंने ये चूज किया कि ये करना है, उस सेंस में वो भी एक ट्रांसलेशन हाउ ठीक इज ही इट है। चॉइस? आई कांट अंडरस्टैंड, प्लीज थोड़ा समझाइए। किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में संखार का मतलब क्या है? कि एक परिस्थिति है, उसमें मैं क्या कैसा कर्म कर रहा हूँ। संखार इज बेसिकली कर्म, है ना? हाँ, दैट कर्म इज ए चॉइस आई एम मेकिंग। अगर वेदना है तो मैं उसमें चॉइस कर सकता हूँ कि आई डोंट react or I react. That is my choice. So in that sense, it is a choice which is made. संखार का ट्रांसलेशन जो है, अधिकतर लोग तो वोलिशनल फॉर्मेशन कहते हैं। उसका मतलब क्या वोलिशनल फॉर्मेशन का? कि मैंने वोलिशन बनाया, है ना, इंटेंशन किया। इंटेंशन इज अ चॉइस ना। आउट ऑफ वेरियस पॉसिबिलिटीज यू कैन डू सो ज्यादातर मेनी। ट्रांसलेशन मेंटल फॉर्मेशन है ना इसका। या या which ultimately results in action. वेदना पचया तन्हा, तन्हा पचया उपादान, उपादान पचया हाँ। भाव। तो हम्म, तन्हा जो है या वो कर्म बन गया ना, कर्म बन गया ना। मेंटल मेंटल वोल्यूशन ही तो कर्म होता है ना, चेतना ही कम कहते हैं। तो इसको चॉइस कहने का मतलब ये है कि आई मीन whenever we क्या make a आई एम choice मेकिंग इट, whenever we make a choice, I make a choice ना, so there is a विच volition is इज my, इन इग्नोरेंस आई मेक अ चॉइस। yeah, the very fact that I am thinking I am making a choice is ignorance ना। मैं ये चूज कर रहा हूँ, ये विचार ही अपने में इग्नोरेंस है ना। हमने कहा कि फीलिंग और परसेप्शन के मिश्रण से संस्कार बनता है। सो फीलिंग मतलब बेसिक ये दो हैं जिनकी वजह से फीलिंग, संस्कार बना। अब वो अगर मेरे दोनों, मैंने उनको देख इग्नोरेंस तो लिया। पक्की है ना। अंडरलाइंग थिंग इज इग्नोरेंस ना। इग्नोरेंस अविद्या चल रही है ना साथ में, तभी संस्कार हाँ बनेगा, नहीं तो संस्कार कैसे बनेगा? हाँ, So that is the sense of self is involved. Whenever I make a choice, there is a sense of self involved. ओके, थैंक यू। इसलिए ज्यादा, इसके सर ट्रांसलेशन में ये भी कह रहे हैं कि हाँ, मोस्ट कॉमन तो वोलिशनल फॉर्मेशन है, लेकिन कई लोग उसको चॉइस भी करते हैं ना। फिर मेंटल बनते फॉर्मेशन, मेंटल सुजातो हो, फॉर्मेशन, वोल्यूशनल फॉर्मेशन, कंडीशन। कंडीशन। तो चॉइस मैंने आज पहली बार नहीं पढ़ा नहीं, इसको देखने के बाद। बनते सुजातो तो सब जगह, अजान सुजातो सब जगह चॉइस ही करते हैं। उनका, चॉइस कहते हैं, अच्छा। बट वी कैन सी देयर इज a deep meaning in it. Whenever we make a choice, there is I involved. मुझे ये करना, ये नहीं करना, है ना? ओके, या फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट लुक्स वेरी Yeah, इंटरेस्टिंग। या it really opens quite a big very Pandora box. powerful thing. Yeah, Oh my God. Okay. Yeah. I can understand now. Oh, yes. कुछ भी कर रहे हैं तो हम चॉइस तो कर ही रहे हैं ना। Yes. Wonderful. Thank you. इसमें वो भी बता रहा है कि या वो भिक्खू सुजातो का भी नाम लेके बता रहा है, उसने या अपने आप ही ढूंढ लिया। हम्म। ये इसे तो अपने आप ही अरन तो नहीं हो जाएंगे। So, so actually the challenge for these are that के वो कब गलत बोल रहा है आपको पता ही नहीं चलता। हाँ, ये पता ही नहीं चलता है। हाँ, सबसे बड़ी खतरनाक चीज ये है। हाँ, वो
वो आपके हाँ से हाँ में हाँ मिला के बोल देगा कुछ भी। हाँ, कुछ भी बोल देगा। आप उससे बोलोगे तू गलत बोल रहा है, कहते हैं, हाँ सॉरी मैंने गलती कर दी, फिर वो हाँ, कुछ और दे देगा आंसर। तो very interesting to interact with it. Yeah, I noticed it. वैसे इधर जो ओरिजिनल पॉइंट था इस सूत्र का, कि एक मेंडिकेंट says that the obstructions are not really obstructions for the one who performs them. इस सेंटेंस का मुझे मतलब ही समझ में नहीं आया। उसकी जो बैकग्राउंड है कि वो सेंसुअल प्लेजर्स को कहता है कि उसे उस समय जब कर रहे हो उस समय कहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है, उस समय तो आप एंजॉय कर रहे हो। अच्छा अच्छा अच्छा, द ओके। पर्सन इज, मैं पढ़ रहा था कि उसमें विनय में भी इसका डिस्कशन आया हुआ है, अरेठा का, कि इसने इस तरह की बात की तो फिर इस तरह से, इसलिए थैंक्स टू हिम वी हैव सच ए बिग डिस्कोर्स ऑन ऑल द टीचिंग। पर ये भगवान बुद्ध ने क्या कहा होगा कि इसको ये कंफ्यूजन, गलत हाँ, फहमी ये होगी पता होगी। नहीं किस बात को लेके उसने ऐसा कह दिया। हम्म, तो ये जो लिखा हुआ एज, एक सेकेंड, as I understand Buddha's teaching, the act that he says are obstructions are not really obstructions for the one who performs them. या मैं जो जो कोई गलत काम कर रहा है उसके लिए क्या ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो कर ही रहा है। इट्स ए कन्वोल्यूटेड माइंड्स थिंकिंग कि भाई वो ये नहीं देख रहा कि ऑब्स्ट्रक्शन किस चीज की है, ऑब्स्ट्रक्शन टुवर्ड्स कल्टीवेशन ऑफ माइंड, ही इज मिसइंटरप्रेटिंग दैट। Hmm. इसमें ये भी कह सकते हैं ना सर, जैसे उसने एग्जाम्पल दिए हैं कि दे आर लाइक बर्निंग कोल पिट, और वो तो है, दोस्त तो एग्जांपल वो आर टू कहता है कि डेमोन्स्ट्रेट। हाँ, सो वो कह रहा है कि ऐसा कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है और वो कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मालूम पड़ता है प्रॉब्ली बुद्धा, बट बुद्धा व्हाट बुद्धा सेज कि फ्यूचर में उसके कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे विच प्रॉब्ली ही इज अनेबल टू अंडरस्टैंड, एंड ही इज सेइंग कि देखो आराम से, हम लोग भी कई बार बात करते हैं ना कि देखो उसका तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, वो तो इतने बेईमानी करता है, बट पीपल प्रॉब्ली डोंट अंडरस्टैंड। कई ऐसे ट्रेडिशंस रहे हैं ना भारतवर्ष में कि आप क्या, वो नाम लेना थोड़ा ठीक नहीं लगता। यावत जीवित सुखम जीवित तो है ही ना, वो वाला दर्शन हाँ, वो चारवाक। तो है नहीं, वो इट इज मोर देन दैट एक्चुअली, इट्स नॉट जस्ट दैट। Yeah. And then it goes tantra and all, they do go for very extreme practices and indulge in sexual pleasure, and then there is so much misconception. Again, why this, I mean, the simile of the raft is a very important uh, part of this sutta, and that is venerated a lot. But भगवान ने इस कंटेक्स्ट में ये टीचिंग कैसे दी, जिस कंटेक्स्ट से ये सूत्र शुरू हुआ है? हाँ, कहाँ से कहाँ पहुंची बात, वन इज एक्सप्लेनिंग द वेरियस सिमिलीज, जो स्केलेटन की, मीट की वगैरह, वो इस सेक्शन में, इससे पहले और वो जो 3-4 सूत्रों में सारी सिमिलीज का ही सेक्शन है वो, तो उसमें सेंसुअल प्लेजर्स के बारे में भगवान ने कई सारी सिमिलीज दी है ना, वो सब इसमें आई हुई है। वैसे बेसिकली इज टीचिंग अ फ्रेश, आई थिंक इज गिविंग द होल टीचिंग इन समरी।
होल आइडिया इज कि वी आर सो मच कॉट इन सेंसुअल प्लेजर्स कि उससे कैसे हम अपने को ड्रॉ करें. तो दी सिमिलीज गिव अस ए काइंड ऑफ मेथड टू, इफ वी आर एबल टू थिंक अबाउट द टीचिंग प्रॉपरली. वो देखा होगा आपने इसमें कि आप टीचिंग का दुरुपयोग भी कर सकते हैं और सदुपयोग भी कर सकते हैं. very well said. If we graft it wrongly, there will be problem. इसमें तो कह रहे सर कि ओवर क्लिंगिंग. Yeah, हाँ ठीक है. clinging to Yes. the, वो तो उसमें जो सूत्र में आता है ना, मैंने तुमसे वो, it is in the another sutta where he explains this, that you should not cling and grasp even the right view, what to talk of wrong view. So that is where this is another sutta, I think. मध्यम निकाय 38 में उसका डिस्कशन आता है. मैं देख रहा था उसको. Basically, the raft has served its purpose, and now there's no need to keep clinging to it. Yeah. That's the meaning. When you, without actually using the raft, we can grasp it and say यही ठीक है, यही ठीक है. उसको इस्तेमाल करते नहीं है. And we become kind of advocates of Buddha's teachings without actually following them. तो जहां से ये बात ऐसा शुरू हुई थी कि ये जो कंधे पे वो रखा हुआ, जैसे बैल को रखा जाता है और वो गड्ढा जो खुदा हुआ है, यहाँ से हमने ये शुरू किया था इस कन्वर्सेशन को. तो अब ये जो फिर अंत में ये हुआ कि उन्होंने ये बस उसको इतना ही कहा कि ये बिल्कुल जब वो इन सब चीजों से मुक्त हो जाएगा तो ये ऐसा ही है कि जैसा इंसान तब फील करेगा कि जब उसके कंधे पे अगर वो बांध दिया गया है और उससे उसको मुक्त कर दिया और गड्ढे से भी उसको बाहर निकाल दिया. ऐसा वो एग्जाम्पल उसकी देते हैं ना, जैसे बैलों की, हाँ, जैसे बैल बैलों का. बंधा हुआ हाँ है. हाँ गड्ढे हाँ. वाले की जो एग्जाम्पल है वो एलिफेंट के लिए बहुत स्ट्रांग है. तो एलिफेंट को रोकने के लिए गड्ढा बनाते थे तो वो गिर जाता है, फंस गया वो, हाँ, है ना. या पिलर फिर से वो बांध निकल नहीं दिया, पाता. बड़े से मोटा सा पिलर है, उसे बांध दिया, वो कहीं नहीं जा सकता. तो पिलर भी उस उखाड़ के तरह की फेंक दिया फीलिंग जो ये. आती है ना कि मैं तो गड्ढे में पड़ गया हूँ या मेरे को बांध दिया गया है, इस हमको लगता है ना कभी कभी गृहस्थ ने बांध दिया, गृहस्थ जीवन ने हमको बांध रखा है, हम तो फंस गए, कहाँ पड़ गए, ये वो. सो दोस काइंड ऑफ एक सिमिलीज ही इज यूजिंग इट. राइट राइट राइट. थैंक यू. लंप थैंक यू. फ्लैश थैंक की यू. बात है अच्छा कि रहा. एक कुत्ता है, उसको जो मीट बेचने वाला है हड्डी फेंक देता है जिसमें कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा कुछ लगा हुआ है, वो फेंक दिया, अब उसे खाया जा रहा है. अब उसको पता नहीं कि वो उसको हड्डी से उसका अपना ही खून है निकल रहा है जो उसी को चूस के मजे ले रहा है. इट्स अ वेरी पावरफुल सिमिली, ऑफ दैट डॉग कल ही बीइंग. हसन पसन्नो इसका जिक्र कल ही कर रहे थे. दिस इज, इस उदाहरण का कल किया. गुड सर, थैंक यू. हमारा कहने का तात्पर्य क्या हुआ? अरंत वो है जिसने ये सारी चीजें खत्म कर दी है. ना वो गड्ढे में गिरा है, ना वो बंधा हुआ है, ना ही वो किसी से पिलर से या किसी और चीज से, ना किसी वस्तु से, ना किसी व्यक्ति से बंधा हुआ नहीं है वो. लेकिन सर बात तो इग्नोरेंस से हो रही थी ना, वो जो क्वेश्चन पूछा था उन्होंने. नहीं, ये हम जो पढ़ रहे थे वो अरंत और नॉन अरंत का डिफरेंस पढ़ रहे थे ना सेक्शन में. हाँ, हम नॉन अरंत का डिफरेंस पढ़ रहे थे, करेक्ट. पहले उन्होंने डिफरेंस बताया, फिर अरंत की करेक्टरिस्टिक बताई कि वो कितना फ्री रहता है, किसी भी चीज से बंधन बनता नहीं है, किसी भी नेगेटिविटी में गिरता नहीं है. यू कैन अंडरस्टैंड इट इन दैट मैनर. सो जिस हद तक हम बंधे हुए हैं किसी भी चीज से, व्यक्ति से, परिस्थिति से, ऑर्गेनाइजेशन से, किसी से भी, उस हद तक हम बंधन में हैं. And we know it from experience, we can get trapped in
चेन गोल्डन भी हो सकती है और चेन लोहे की भी हो सकती है। चेन चेन ही है। जी सर। गुड। Thank you, sir. Thank you, Deepak ji. Do some concluding verses. इसे भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोऽधि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोऽधि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोऽधि भवन्तु ते। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपठिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो संघं नमामि। थैंक यू दीपक जी। Thank you, Deepak. Thank you. Thank you, Deepak ji. Thank you, sir. Everyone, thank you.